discussing about the 3D printing, right? Till now we have heard, I think, many speakers related to that particular topic, 3D printing and smart manufacturing, isn't it? Why? Because 3D printing is boon to mankind. It says in not only in our industry point of view, but in healthcare, that 3D printing is boon to mankind. Anyone of you can you tell me why it is boon to mankind? Yes, the participants. All are the participants, students. Yeah. Anybody can justify why 3D printing is boon to mankind? Yes. You are aware about the applications of 3D printing, right? Yes, participants. Okay, I'll explain. Yeah, 3D printing is boon to mankind because 3D printing can do anything, and not only for the engineering, but in various fields. Whether it is particularly if we are saying about the engineering, whether it is automotive industry, 3D printing is widely used in auto industry, whether it is Tata Motors, whether it is Rolls Royce, whichever industry it is, and in special purpose machining, machines, and right now, if you are aware, in construction industries as well, that with the help of 3D printing, we can build a whole house. If you are aware about the construction 3D printing, earlier the conventional thing was different. Right now, in fashion industry, whether it is in fashion industry, whether it is in interior designing, forensic, and especially in medical. That era was there. If you are remember the Ramayana, when the nose of Shurpanka cut by whom? Cut by whom? Lakshman. But at that time, Ravana ने उनको नया नाक नहीं दे पाया, nose नहीं दे पाया. But with the beauty of the 3D printing, right now we can process that nose or ear, and I'm going to show those studies. Yes, I'm not kidding. Personally, we have processes the ear. One of the case study I have included in my session for Government Dental College Nagpur and VSPM Dental College Nagpur, where we have given the processes ear of one of the patient from Gadchiroli with the help of this technology itself, right? So this technology is booming in medical world, whether it is dental, whether it is cardio, whether it is neuro, ortho. So those are the things I have included, and I have included my real-time case studies so that you can get to know how that 3D printing can be used for your particular research and for particular academics. Just sir asked me about the consultancies. Yes, I don't know about the consultancy status and IPR status, but I'm telling you, with the help of this technology, you can do anything. I'm having 35 IPR right now. 10 utility patents I'm having, 15 industrial designs. So because of this, because earlier what was happened, abhi ma'am ko kuch banana hai, right? Ma'am is having ideas or anything is having concept in their mind. But earlier we are unable to develop in real time, right? रहता है ना, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज रहती है बच्चों, रहते कि नहीं? शॉप में जाते हो, यूजुअली लड़कियां या वुमेन, एक दुकान से उनका होता है क्या? Whether it is about sandal or whatever product it is, because whatever expectation, whatever imagination you have, those products are not available. But you know, with the help of this 3D printing, you can convert your concept or ideas into your reality. That's the beauty of this 3D printing, right? That's why this 3D printing is said as a boon to mankind. Right? So, in my limited session, I am going to cover aware about the 3D printing, and my major focus is towards healthcare. Right? Yeah. What है? Okay. Yeah. Another subtopic of our seminar is Industry 4.0, right? Industry 4.0, everyone is aware about Industry 4.0, how the
era is shifted from industry 0.0 to industry 4.0. And apart from AI, ML, data science, and IoT, 3D printing as a mechanical engineering, 3D printing is also a key pillar, plays a key role in industry 4.0. So I am starting my session from one of my case study, which is also revolutionary, and it is example of industry 4.0. If you are aware, the major disease found in women from the rural areas is cervix cancer. You know, many women or women are suffered from this cervix cancer, and there is a lack of knowledge and lack of facility at tribal and remote level. But Dr. Anupama Bhute ma'am is there, who is a renowned gynecologist from Nagpur. We have tried to develop one of the device which is the great example of industry 4.0 in healthcare device, where we have used 3D printing to develop this particular structure, right? And there is an integration of a mobile app which is embedded with the AI, which you compare the image of cervix taken from that particular patient and compare with their database and predict the early sign of cervix cancer, so that if there is a chances or sign of cervix cancer, then they can approach to urban areas gynecologist. So this is the beauty of industry 4.0. Whether it is for clinics, whether it is for industry, we can integrate all those stuff. And you know, hopefully other speakers also talked about how era is shifted from industry 1.0 to 4.0. Mr. Amol Om Lanjevar is going to discuss more on this in detail. Yeah, these are the key pillars. And mind, 3D printing as a mechanical engineer, 3D printing is plays a very important role here. Yeah, I have included one small slide. Do we have various grants received by the students or department? Usually, as I am telling you, 3D printing is widely used in medical healthcare or innovations. The main, what we can say, fear for product development is fund and guidance, right? But with the help of this such a FDPs, knowledge is shared by the expert. But what happens to design and develop, the we can say the limitation of fund is there, the grants. But I am sharing one of the various grants which are widely used for 3D printing and healthcare allied researchers, right? So BIRAC Big is one of the grant. Students from final year or faculties can also note. I am the recipient of 15.5 lakhs KVIC grant. I have recently received the ICMR grant for this, the same, for the oral cancer detection. So if you are interested, you can note down. That's also one of the hurdle that can be solved with the help of these grants. For idea level, if your students are having the ideas, simple ideas related to your product, and if it is integrated with the 3D printing and medical innovation or social innovation, you can apply Nidhi EIR. DST's Nidhi EIR is there. I have applied that grant and received it from my wife name. So we have received the grant from IIM Nagpur, right? So don't what we can say, don't limit yourself, don't limit your ideas related to 3D printing or healthcare innovations. Approach, at least apply those particular proposal to any incubator or funding agency. Okay, so Nidhi IR is only for idea, if you have. Then further, Nidhi Prayas is there. Why I'm sharing at earliest? Because इससे फायदा ही क्या होगा? आइडिया तो बहुत है, 3D प्रिंटिंग से कर तो बहुत सकते हैं, पर पैसा कहाँ है? मेंटरशिप कहाँ है? We are not from a business family, right? So that's why I'm sharing this in a glance. And then POC, proof of concept के लिए निधि प्रयास मिलती है. My one of two students have received 10 lakhs grant from IIT Bombay, Sine and Venture Center Pune. 10 lakhs for just to convert your idea into POC, prototype. Hope you are aware about a prototype. Prototype माहिती है? Yes.
Prototype माहिती है ना? So for POC or prototype, they are funding, and then there is main funding, that is BIRAC big. They are giving 50 lakh fund for that particular innovation to convert just for the development of product. Three case studies I am telling you, three project which is allied with 3D printing. Mr. Piyush, okay, one of my best friend, received 50 lakhs BIRAC only with the help of 3D printing. How? Later on, I am going to show you that, in healthcare industry, 3D printing is not only used for the functional development but for prototyping as well. Temporal bone hota hai yahan pe. Temporal bone is there. So he developed only temporal bone. And temporal bone for the anatomical dissection, like study for the ENT surgeons, right? ENT surgeon नाक कान घसा माहिती आहे ना, त्या डॉक्टरांसाठी त्यांनी anatomical model बनवला. Then it is required for the mock surgery for the critical cases. So he just developed that anatomical model of temporal bone and he received 50 lakhs rand. How he developed that particular product? With the help of 3D printing. Are you getting how I'm connecting 3D printing with the real-time case studies? So you can develop those prototype. Those are very essential for the study or very essential for the research, and you can get it. My another student is Mr. Rohan Deshpande. Right now he is incubated in Raisoni. So initial days we have started one of the research with ortho HOD, Dr. Sushil Mankar sir, who is the HOD in Lata Mangeshkar Medical College. So we have developed the lengthening of lengthening of bone. There we have used the metal 3D printing with the help of IIT Bombay, and he is also recipient of same grant 50 lakh. उसने क्या किया? आपके दिमाग में जो इनोवेशंस थे, आइडिया थी, जो प्रोजेक्ट थी, 3D प्रिंटिंग का उसको एक फेल दिया, एंड द सेम इनोवेशन हेल्थ केयर. अब बिफोर दैट 50 lakhs grant, he received a 10 lakh grant from the venture center Pune. Are you getting my point? What I'm trying to say? Don't limit your 3D printing knowledge till the education only. Try to integrate that particular knowledge for your research. This is not only I'm telling for the students, but at the same time for the faculties also. As sir said, that various faculties have joined from the different colleges and from in-house itself. We know for MBA, for NAC, for NIRF, we required innovations, whether it is IPR, whether it is funding, whether it is consultancy. Isn't it? लगती है ना अपने को? So that can be done with the help of 3D printing. And I'm going to show those case study, real-time case studies which I have did along with the various doctors, so that you can sensitize and you can perform by own here in Malkapur. Yeah. Yeah. So this is all about the funding related to 3D printing and healthcare innovations. So you can grab it and don't limit yourself. Apart from this, if you are aware, there are another funding sources like MSME, KVIC also. They are giving the dedicatedly subsidy funding, PMEGP, CMEGP, up to 25% or 35% subsidy is there. Means 25% funding will be shared with by government. So you can convert your idea into a product with the help of those funding. Yeah, 3D printing. So 3D printing, you are well aware about the 3D printing. I am going to just give overview about the 3D printing once again. Yeah, in healthcare, right now I am an assistant professor in Ramdev Baba, but earlier I was having a startup of 3D innovators, which was looking after the 3D printing services, and another was precision aligners. Precision aligners was my startup where we used to develop the clear aligners. आपने देखे होंगे ना, दांत का कुछ प्रॉब्लम रहा तो ऐसे मेटल वाली चीजें दिखते हैं, देखे हैं? बट अगर कोई सुंदर सी लड़की है, कोई लड़का है, अच्छा दिखता है क्या? No. But we can develop those clear aligner which will be clear in visibility
and handy, and which at the same time which is going to solve your orthodontic problem. तुमचे हात जे दात हेकडे वाकडे डिस्टन्स असतात त्याच्यासाठी ते यूज करतात, right? So see the scenario. This is the US based demand of dental 3D printing. How era is shifting from 220 to 30. This is a global market in healthcare industry for the 3D printing, you know. Even though, like we used to study, these guys are from mechanical engineering. कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हो आपने? सॉफ्टवेयर्स, CAD, कौन सा CAD सॉफ्टवेयर? CATIA, Creo, SolidWorks, and right. Apart from these software, there are biomedical CAD software which I am going to discuss, right? And jewelry CAD also. If you having that particular knowledge, you can get the job in overseas countries as well. So yeah, this is the various dentistry applications. Yeah, so hope you are aware 3D printing. Just 3D printing, it was like 2D printing earlier, just converting the 2D form data into 2D form data, and then just converting 3D digital form into 3D. Like this is the analogy behind that. Yeah, hope you have got why 3D printing is important. Why? Because earlier with the conventional 3D, as you are a mechanical engineer, you know there are we need to develop various products with the complex shapes, right? But which was limited in conventional manufacturing, whether it is CNC, whether it is lathe. But with the help of 3D printing, we are right now can develop the multiple complex shapes. Like you can see, तो झुनझुना एक के अंदर दूसरा है. इनिशियली अपन मोल्डिंग से बनाते थे, पर मोल्डिंग में आपने देखा होगा पार्टीशन लाइन दिखती है, right? But with the help of 3D printing, like SLS is there, laser sintering, so you can develop such complex shapes with the help of 3D printing. You know, if we need to develop that spanner with conventional manufacturing, अपने को कैसे part में बनाना पड़ेगा. But with the help of 3D printing, we can develop at the same time, right? Direct manufacturing is there. Another limitation of what we can say conventional was what? Material complexity. Material दूसरे use नहीं कर सकते थे. But with the help of 3D printing, we have take over this. Hope you are aware about this multiple name of 3D printing. आपने पढ़ा होगा earlier sessions में, whether it is rapid prototyping, stereolithography, additive manufacturing. This is how the era is shifted from subtractive manufacturing to additive manufacturing, right? Because multiple limitation, whether it is geometric complexity, material complexity, today's generation or today's era is working on optimization, right? Material wastage नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं overall product के लिए. And in subtractive manufacturing, whether it is carpentry, क्या करते हैं अपन? Raw material लेते हैं and then we are subtracting the material to get the desired shape, right? Same in milling also, we are doing the same. Milling में भी raw piece लेते हैं और material subtract करते हैं. So subtraction यानी conventional manufacturing में another एक limitation क्या था? The material wastage. So how the era is shifted from the subtractive manufacturing to additive manufacturing? Additive manufacturing, 3D printing, right? Yeah. So this is the conceptual difference. Hope you are aware about this. I am skipping this slide. 3D printing, just conversion of digital form into physical form. I am just taking it on a little faster mode. आपका थोड़ा हो भी गया होगा, okay? And we are running short for that particular session. Yeah. So just converting digital form into physical form, right? Layer by layer fashion, and like jalebi making, extrusion. Right, the basic principle, jalebi like extrusion, like welding, right? As a mechanical engineer, and layer by layer, brick by brick, जैसे ये दीवार बनती है वैसी ही, in that fashion 3D printing works, right? That's why it is known as additive manufacturing. Yeah, CAD model, then layer by layer, in this fashion you will get the desired shape. Additive approach. Yeah, you know, the inventor of 3D printer, Mr. Chakhal. Yeah, right now, coming to our main point, working.
Can anybody tell me how 3D printing works? What are the steps? We have to prepare model into a CAD. Okay, then transfer to 3D printer. Then transfer to 3D printer. Yes, anybody? Software is needed. Software is needed. Which software? Depends on material. Still काही काही चेहरे पाहल्यासारखे दिसत नाहीत नाही वेदर बघितलं का तुम्हाला त्यांना ओके ये डिटेल एनीबडी डिटेल प्लान ऑफ 3D प्रिंटिंग डिटेल में कैसे व्हाट आर द स्टेप्स अपने इतने क्लासेस हो गए होंगे सबसे पहले या CAD modeling right first step is creation of CAD modeling then converting that part file or that particular engineering file into a STL format. Like if we are working on Creo, then that particular file will be a part file, and if we are working on CATIA, then that file will be a .cat file, right? So first step is creating a virtual model, right? Creating a virtual model जिसका आपको 3D print करना है, right? So first step CAD modeling, and then converting that particular CAD model into a STL file. Are you aware about the STL file? Why it is saying as STL file? What is the long form of STL? Anybody from participants? Stereolithography. Yes. Any other answer? Stereolithography. Yes. Stereolithography STL को बोला जाता है, but it is not. It was just analogy. Why I am telling you? Because the first 3D printer, invented by Mr. Chakhal, was stereolithography. मैंने पहला 3D printer जो बन गया था, that was resin printing, जिसको stereolithography बोलते थे. तो उस फाइल को STL abbreviation दिया. But .stl means standard tessellation language. .stl means standard tessellation language. Another इसको और बोला जाता है standard triangular language. Why? I'm going to explain further. Okay? उसको क्यों बोला जाता है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज? आई एम गोइंग टू टेल यू. बिकॉज पार्ट फाइल आप बनाते हो CAD, यू आर अवेयर. CAD में आप जो CAD मॉडल बनाते हो, इट इज सिंपल फैसेट, यानी सिंपल एक फेस रहेगा. बट जो वो CAD को आप कन्वर्ट करते हो STL में, सो इट कन्वर्ट होल फेस इनटू अ ट्रायंगुलर फॉर्म. यानी सिंपल अगर ये वॉल है तो इसमें डायगोनल कनेक्शन आ जाएगा. रेक्टेंगुलर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा. दैट्स व्हाई इट इज सेज एज standard triangular language. Got my point? STL? Yeah, meshing, but in triangular form, right? So that's why it is standard triangular language or standard tessellation language. Then, like as we said, this is additive manufacturing. 3D printing is additive manufacturing, and it's work like adding material layer by layer. So we need to give the layer thickness. कितनी height रहेगी? अगर अपने को मॉडल बनाना है वो सॉलिड रहेगा, हॉलो रहेगा. सो दोस थिंग्स आर डन इन स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, राइट? एंड इट कन्वर्ट्स just that STL file into G code, that program, and that particular program is given to a 3D printer to get the desired option. So this is the what we can say 3D printing working, which you must know. Okay, so here I am giving one catch. This is my question for student and all participants, means faculty as well. If I ask to develop this bottle on CAD, everyone can do that? सब बना सकते हैं? Yes or no? Yes. Say loudly. Yes. Yes. अरे सकाळची वेळान थकले का? Okay. If I ask to create the CAD model of this femur bone, femur is the longest bone of our body. Right? Can you develop the CAD model of femur? हाथ ऊपर करो जो बना सकते हैं. Yes. As first step of 3D printing is CAD modeling, right? But if you need to develop the organs, like I am giving the example of femur bone, can you develop the CAD model on CATIA, SolidWorks?
Yes, faculties. Yes. कैसे? Yeah, that is the important for developing any product on engineering CAD. What is the main input? Dimension. We require the dimension. We require the length, breadth, whatever. But how we can get the dimension of organs, right? So पहली step biomedical के लिए थोड़ी अलग है. Okay, but still any guesses how we can get the dimension of any organ? How we can use CMM for femur? Okay, yes, from this side. How we can get the dimension of femur? How we can get the dimension of kidney? Just गलत हुआ तो चलेगा, मैं हूं, अपन डिस्कस ही करने वाले, but before that I am asking. Medical data. What type of medical data? They are doing their practicals on the bodies. X-ray. Sir said X-ray. Yeah, from X-ray we will get the only two-dimensional data, length. But if we need a 3D geometry, so we need a three-dimensional data. So after X-ray there is a CT scan, MRI. So remember, for CAD modeling of any organ, we required CT scan or MRI data, right? So we can convert that CT scan and MRI data into a CAD model. I'm going to show that particular thing. So hope this is clear, right? Yeah. So this was I'm telling you. First, engineering CAD. I'm not going to show the video for that. You are aware about the engineering CAD software, right? Okay. I'm going to show the medical CAD related thing. तो वीडियो लाता है क्या? As the topic is related to software, I'm going to tell you related to biomedical CAD software, right? So one of the software is there. Link second medical CAD वाला त्याच्यावर क्लिक करा. मला प्लीज वेळेबद्दल सांगाल. वेळ हा कधी स्टॉप करायचं ते सांगाल. Yeah, so there are various CAD softwares, biomedical CAD softwares. One of the special use biomedical CAD software is Mimic Thematic. It is widely used in It is widely used in industry. You can see the import. They are importing the CT scan data. You can see the various views. Don't worry, I am going to explain that. Hello. बरोबर. Yeah. So this is the biomedical CAD. We must know, as we are using 3D printing, and 3D printing is widely used in biomedical CAD. I'm going to show the one. Close करा है. Close करा. Show the PPT. Show the PPT. Yeah. नहीं change नहीं होता pointer. So first, remember about these softwares. First, engineering related CAD, free open source software like Blender. You can use Fusion 360. These are the open source software. You can use Onshape also, right? And then there are various paid softwares.
And for computer means like planning of we can say surgeries, you can use Blue Sky Bio, Exoplan. These are the medical related surgical planning softwares. You can note down. Blue Sky Bio is open source for 3 export. You can convert that DICOM data into a STL file. So we are focusing more about the biomedical thing. Okay. First, you need a CT scan data. CT scan. The file format will be DICOM.dcm file. Just you need to import that CT scan data into Mimic software, right? And then that Mimic software is converting that particular data into STL file. And then you can edit that particular STL file on editing software. So these are the open source software. 3D slicer एक software है, InvisAlize एक software है, जिसमें आप डाइकॉम डाटा यानी सीटी स्कैन एमआरआई डाटा आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो 3D प्रिंटिंग फॉर्मेट में. रिमेंबर दिस. ओके. एंड द मोस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इज मिमिक. Once you have converted that DICOM data into STL, but still whenever we capture that particular radiographic image, certain noise will be there. जैसे अपने को बोन चाहिए पर बोन के साथ सॉफ्ट टिश्यू भी है तो वो स्कैन में आ जाता है. तो वी नीड टू एडिट दोट पर्टिकुलर थिंग्स. तो देयर आर editing tools: Mesh Mixer, Mesh Lab, MATLAB. These are the STL editing softwares. You must know. Okay, STL editing software. As you are going to use 3D printing, you must aware about these softwares, right? Mesh Mixer is by Autodesk and it is open source. So you can install in your lab also and you can teach your students. No issue. Right? So remember, this is about biomedical CAD. At this time itself, I am going to show one PPT, another slide. मिलेगा? हाँ, एक मिनट. ठीक है सर. ये हाँ. हे चार्जर लावशील बंद व्हायचं दिसून घालायचं. ठीक आहे सर. चार्जर कोणतं सर? हे का? दिलं होतं मी तिथे. हेच आहे का? हा हा. व्यू कुठं लागतं? काय करायचं? व्यू फुल स्क्रीन व्यू लावून आहे. नाही सर. बरोबर. चार्जर लावून टाक. राइट क्लिक करून कुठे स्क्रीन ऑप्शन वेगळा ऑप्शन आहे त्याच्यात कॉन्फिगर. चार्जर लावून टाकलं उगाच. ओके, सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग. या, this is an important CAD modeling dedicatedly for implant modeling. Yeah, this is licensed software which is not available in any college because it is only available right now in VNIT and in Raisoni. It costing almost 10 to 15 lakhs, right? So that's why I have captured images to tell you how it works and what are the important points. Okay, so this is the screen. Then just you need to import that DICOM data. DICOM data means MRI और CT scan का folder रहेगा, वो आपको import करना है. And first step will be thresholding. इसमें क्या करना है सबसे पहले? Thresholding. Thresholding means, as I told you, there will be, whenever we use the radiology, whether it is CT scan or MRI, our targeted part will be different. जैसे अब मुझे एक bone चाहिए, right? Bone चाहिए, but at the same time वो soft tissue भी लेगा, CT scan, MRI. So in that particular biomedical CAD software, we need to define ki what is the requirement, whether we require soft tissue or whether we require hard tissue. Okay, so first thresholding, and there are various options. Whether we want bony part, if you want bony part to predefine, they will set the threshold value for the bony structure. If we want enamel or soft tissue, there is an option of soft tissue and enamel. And particularly after that particular thresholding, it will create a 3D geometry over here.
ओके आपने बोल दिया बोन, तो आपने सीटी स्कैन लिया था फुल फीमर का, पूरा पाव का, सो इट विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ortho-related means bone. After that, if your targeted part will be just any section, whether it is knee or whether it is that particular bone, then you need to do the masking. You need to do the masking कि आपको कौन सा एरिया चाहिए जो आपको फाइनल एसटीएल जिसकी चाहिए. अदरवाइज इन 3D प्रिंटिंग में मटेरियल इज हाउ मच मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा. तो प्रॉपर टारगेटेड एरिया यू कैन कट, you can edit that particular mask that I want this part only. Okay, so you can edit over here and that it will gives that particular STL file, and then there is an option that you can export that final geometry in binary or in ASCII format. Got it? How the biomedical CAD works? First you need to give the thresholding. आपको bony part चाहिए या soft tissue चाहिए, right? Then you need to do the masking, means whichever targeted part is there, so you need to edit that particular mask, right? And then just simple you can convert that biomedical data, radiology data into STL, which is the input for the 3D printing. Got it? So अभी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई, whether it is for the student or whether it is for the faculty, कि मुझे ये ऑर्गन चाहिए, मुझे एक आधा डेंटल टूथ बना के चाहिए फॉर द मॉक सर्जरी. डेंटिस्ट है मालकापुर में, सो यू कैन अप्रोच फॉर द कंसल्टेंसी इवन फॉर द जॉइंट रिसर्च. ओके, आई एम गोइंग टू शो दोज केस स्टडी फर्दर. या ओके, गॉट इट. ती पीपीटी दुसरी लावशील रेग्युलर वाली. Yeah. And then first CAD modeling. For the first step there is a three what we can say input. First CAD modeling with the engineering CAD, second for the biomedical CAD, and if we don't have the CAD, there is a reverse engineering, 3D scanning. So for auto industry and 3D fingering, 3D हे बंद कर नशल दादा. हाँ, so we can use the 3D scanning as well. 3D scanning, reverse engineering, so for auto sector, अगर आपके पास blueprint नहीं है या कोई antique चीजें है, so we can't create the CAD. So right now there is option of 3D scanning. Hope you are aware. So in this way also you will get the first step. जो आपका CAD modeling का purpose है, इससे आपको मिल जाएगा. Right? And with the 3D scanning, you can capture the data. There is a 3D figuring concept is trending, where we can create our own structure with the help of 3D scanning. Yeah. इकडे पण क्लिक करशील बाजूला. Various automotive industries are also using the 3D scanning. Artec EVA is the famous 3D scanner used for the 3D scanning. In auto industry, handheld scanner are being used for that particular chassis scanning. And this way also we are getting CAD model. Got it? पहली step clear हो गई. Not only engineering CAD, but we can get the CAD from these different inputs. You can see like Barack Obama का वहाँ पे CAD model बन रहा है, STL file बन रही है, and here for the auto industry also you are using. मला वेळ सांगशे ना, मी वेळ सांगशे, नाही तर माझं फ्लो असं राहतं की बंद होत नाही. हां, तू लागेल तर लिमिट करून द्यायचं. Okay, then you are well aware about the 3D printing, right? Yeah, as I told you, STL. Whenever we are creating the CAD, it's simple phase, right? And whenever we convert that particular CAD file into STL, it converts like that, diagonal, as I told you, right? That's why STL is known as Standard Triangular Language. Got it? At this moment itself, I am going to tell you about another software, that is NetFab. क्या होता है? STL open source available है नेट पे. आप डायरेक्टली जैसे ग्रैब कैड के लिए पता है आपको, जैसे रेडीमेड कैड चाहिए अपने को, कैड फाइल ऑफ बॉटल, कैड ऑफ फाइल ऑफ कार, यू कैन जस्ट गो विजिट द grabcad.com. वहां पे आप कैड मॉडल के जा सकते हो. वैसे ही एसटीएल के लिए थिंगीवर्स या येगी वेबसाइट है,
थिंगीवर्स या यगी, जहां पे पहले से ही STL अपलोडेड है. बट व्हाट हैपेंस, समटाइम्स दोज STL आर गेट करप्टेड. सो करप्टेड होते हैं यानी क्या होता है, ये जो ट्रायंगल रहता है ये करप्ट हो जाता है या मिसअलाइन हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर फाइल गिव्स अ एरर. रिमेंबर दिस. एंड व्हेनेवर इट अपीयर्स यू कैन यूज नेटफैब सॉफ्टवेयर. विच सॉफ्टवेयर? नेटफैब, जिसमें आपको STL रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा. अदरवाइज आपका पार्ट प्रिंट ही नहीं होगा कोई सॉफ्टवेयर पर. गॉट इट? नेटफैब. या so step by step, you know, there are various type of 3D printing. N number of 3D printing are there, but we are going to discuss only 3, the popular one, and with respect to that I am going to share the case studies and software. Yeah, you know about the various 3D printing related to medical. FDM, hope you are aware. Simple fuse deposition modeling method, where we use what we are using in FDM. It is simple filaments of thermoplastic which are using, and with the extrusion method we are getting the desired shape. Hope you have heard and discuss about this. पता है FDM के बारे में? Shall I move to case studies? That will be better. FDM के बारे में पता है ना? Okay. So I'm moving ahead to case studies. Hope you are aware, on FDM 3D printers, most of the 3D printing means 3D printers are compatible with ABS, PLA, these type of material. And renowned 3D FDM 3D printers are Ultimaker and Stratasys. Stratasys developed by 3D Systems. You know, पेटेंट का आपको पता है, पेटेंट 20 साल की वारंटी रहती है, यानी ये रहता है लाइफ उनका ड्यूरेशन. 20 साल के बाद उनका जैसे ही एक्सपायर्ड हो जाता है, इट इज ओपन सोर्स. 3D FDM 3D प्रिंटर का वैसे ही हुआ. 3D सिस्टम्स ने पहला 3D प्रिंटर बनाया था, एंड देन उनका पेटेंट ये हो गया, एंड देन यू कैन सी द रेप्रैप, जो आपको क्रियालिटी के 3D प्रिंटर देखेंगे एवरीवेयर. बाम्बू लैब्स सब ने FDM 3D प्रिंटर बना ली, right? But the renown of this, you know about the challenges or limitation of FDM 3D printer, right? While removing the material, you are getting the irregular shapes. So we are coming right now on the surgical planning, or we can say on the uses, application, right, of FDM 3D printer. First of all, I am going to share the real-time case study which I have personally did. With my experience, right? And you can perform. Hopefully यहाँ पे मैकेनिकल वाले भी बहुत ज़्यादा है और डेंटिस्ट भी है. So you can sir, you can HOD sir is there. Your HOD? Who is HOD? हाँ, पाटिल sir. Yeah. मैकेनिकल के कौन कौन है फैकल्टी? Raise your hand. Not only मैकेनिकल, CSE कोई भी हो गए. I must say, मैम, कंसल्टेंसी जरूरत है, रिसर्च. You can go ahead with this, and you can go give the final. So first, अभी सोचो, like your friend is become the surgeon, cardiac surgeon बन गया वो, और कोई केस आई तो आप उसको दोगे क्या? If he is a fresher? No, because अगर कोई कॉम्प्लेक्स शेप रहता है तो उनको सर्जिकल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, मॉक सर्जरी, राइट? सो सर्जन्स को मॉक सर्जरी की प्लानिंग पड़ती है. एट द सेम टाइम सर्जिकल एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है. यू नो, मुन्ना भाई MBBS देखा है? उसको बॉडी चाहिए रहती है, बॉडी मिलती है क्या? नहीं. सो दिस इज द फैक्ट. इन ओवरसीज कंट्री कैडावर अवेलेबल नहीं रहता. कैडावर यानी जो मरी हुई बॉडी रहती है उसको कैडावर बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वहां उनके पास कैडावर अवेलेबल नहीं है, तो 3D प्रिंटिंग के एनाटॉमिकल मॉडल्स बनते हैं, राइट? यू नो, so that's why it is widely used in overseas country, and you can develop the mock trials. This is the one of the surgical planning we did with the Dr. Priya Gupta, who is a prosthodontist of Nagpur. So zygomatic implant, मैंने बोला था यहाँ पे temporal bone रहता है, यहाँ पे zygoma रहता है, and which is the one of the critical surgery in dental treatment. वहां पे इधर उधर भी गया तो हो गया लंबा. So what we did, we have developed the mock prototype for her surgical planning. इसमें भी क्या किया हमने? CT स्कैन लिया पेशेंट का, एग्जैक्ट उसी पेशेंट का, then we have converted into STL and then 3D printed with the FDM software जो आपके पास है, right? And in this way we have implement the FDM 3D printing and that software knowledge for this particular case study. This is one of the case study which we have performed in GDC Mumbai, Government Dental College Mumbai.
एक्सीडेंट होता है कोई भी, एक्सीडेंट अगर होता है तो क्या होता है, फेशियल प्रॉब्लम हो जाएगा, टूट जाएगा आपके फेसेस के बोन्स. सो वन ऑफ द केस वाज देयर एंड वी हैव डेवलप्ड वन मॉक फॉर डेवलपिंग फॉर द डॉक्टर विकास ऑर्थोगेनिक सर्जरी. Another thing, as a mechanical engineer, we used to develop various medical devices, right? If you are thinking about the biomedical devices, please think on it. There is a huge demand. अगर आप अभी प्रोजेक्ट दे रहे होगे तो बायोमेडिकल वाले प्रोजेक्ट दो, बिकॉज अभी फिलहाल ओनली देयर इज अ जापान और कोरिया और चाइना इज देयर, बट एनी ह्यूज need of Indian make devices, because जो devices है these are huge, are having huge cost. So one of the case came from Calmette Dental College, you know, वहाँ पे bone ridge mapping, ये जो bone रहता है यहाँ का, उनको वो measure करना था. And every sir वो तो measure कर सकते ना, CT scan आपने ही तो बोला है, but you know exposure to radiology, radiations are means limited. We need to keep the limited things. So every time she can't perform the X-ray, or every time she can't go for the CBCT scan, right? So we have redesigned the vernier caliper which we are using, you know, and we have redesigned it for bone ridge mapping. You can see, and we have measured that bone ridge with the help of this. One of the PG was there, Jigyasa Shahu and Akhilesh Shivade. I have not due to मेरा second session था, मैं वो include नहीं कर पाया, but I would like to tell you that novel, like you know, in Vidarbha, what is the major disease occurs in rural areas? Oral cancer. Why so? Because of the तंबाकू and खर्रा, isn't it? है कि नहीं? तंबाकू and खर्रा. So oral cancer में क्या आपने देखा होगा, तंबाकू खाणाऱ्याला म्हणत होते दात उघड, एक बोट दोन बोट पण जाता क्या? नहीं जाता. बट इन ओरल उसको OSMF पेशेंट बोलते हैं, OSMF, राइट? सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड द ओरल एक्सरसाइजर, राइट, विद द डॉक्टर आशीष बोधड़े सर इज देयर, हु इज अ नेटिव फ्रॉम मिर्तिजापुर इटसेल्फ. कल ही उनको फोन किया था जब मैं ऑन द वे था. So we have developed the jaw exerciser for that particular oral cancer with the help of what? FDM 3D printing. So कर सकते हैं ना? Why to limit our research? Why to limit our projects? You can go ahead. Yeah, universal screwdriver for Bhavna, JDC. So all these things we have developed with the help of FDM 3D printer. Do our college is having FDM 3D printer? है? नहीं भी है तो no issue. You have the collaborators. I am there. कोई भी शेगाव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, there is no issue. I have worked with overseas country और यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के इनके साथ किया. तो if you have any case, definitely we can collaborate for any research or any consultancy. So don't worry about it. Then FDM का यूज कर सकते हो आप easily. यहाँ पे मलकापुर में BC सर ने मुझे पूछा था कंसल्टेंसी के रिलेटेड. You can approach. यहाँ पे कितने डेंटिस्ट होंगे सर मलकापुर में? BDS है कि MDS है? MDS, प्रोस्थो होंगे, एंडो होंगे, राइट? बहुत. आप एक एक केस स्टडी नोट डाउन कीजिएगा, ओके? और जितनी केस स्टडी मैंने दिखा, whatever I am telling you, it is my real time case study rather than picking on from the web. I am telling you which I have personally experienced. Then SLA. Hope you are aware about the SLA. We are running short, so I am skipping. SLA clear है? SLA में क्या रहता है? पता है ना सबको? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं स्किप करूंगा और आपको पता ही नहीं SLA क्या है. SLA स्टीरियोग्राफी जो आपने बोला था, द फर्स्ट काइंड ऑफ 3D प्रिंटर डेवलप बाय चखल. इसमें क्या रहता है? वैट ऑफ फोटोपॉलीमर रहता है, यानी फोटोपॉलीमर रेजिन रहेगा और ऊपर से लेजर इंसिडेंट होता है, लाइक दिस. पहले the limitation of FDM was that less accuracy. The nozzle diameter of FDM is 0.4 mm. So उसकी लेयर थिकनेस जो मिलती है वो आपको 100 माइक्रॉन्स तक ही जा सकते हो. 100 माइक्रॉन्स यानी 0.0 mm. उससे कम लेयर थिकनेस आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी. और 3D प्रिंटिंग में, इफ यू आर अवेयर, 3D प्रिंटिंग यू नो 3D प्रिंटिंग स्पेसिफिकेशन कैसे जाने जाते हैं? अगर आपको 3D प्रिंटर लेना है, लाइक राइट नाउ यू आर द मैकेनिकल फैकल्टीज, आपको
प्रिंसिपल सर ने दिया है कि नया 3D प्रिंटर लेना है, ऑन विच बेसिस यू आर गोइंग टू परचेस, लेट मी नो फ्रॉम द फैकल्टीज। या अभी आपके जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने बोला 3D प्रिंटिंग का एफडीपी तो हो गया, अभी 3D प्रिंटर लाओ कॉलेज में। सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विथ, एनीबडी? यस फैकल्टीज। Yes, purpose is clear, okay. Purpose is for the practical, whether it is in AIP or CAD. Yes, how you are going to purchase? क्या बोलोगे इंडस्ट्री वाले को, कौन सा 3D प्रिंटर चाहिए? On which basis you are going to select? Remember, okay, remember this. कोई भी 3D प्रिंटर, FDM 3D प्रिंटर, उसके एक्यूरेसी से जाना जाएगा। एक्यूरेसी कितनी है ये पूछना है आपको। एक्यूरेसी 100 माइक्रॉन्स अप टू 100 माइक्रॉन्स पर जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना? व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ एफडीएम में फिलामेंट्स आप जो यूज करोगे इट इज एसोसिएटेड विद दैट। जैसे एबीएस पीएलए करते हो तो 210 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, बट एज अ रिसर्चर और एज अपने को नायलॉन यूज करना है तो फिर so you need to check the temperature, right? Then build volume, remember about the build volume. Build volume is the important parameter for the 3D printing. कितना बड़ा पार्ट आप प्रिंट कर सकते हो उस पे उसकी कॉस्टिंग डिपेंड करेंगे। आप छोटा ही बनाओगे क्या, आपके मेजर पार्ट्स है, सो बिल्ड वॉल्यूम पूछना कितने बाय कितने का बना सकते हो, गॉट इट? देन सिंगल एक्सट्रूडर, डबल एक्सट्रूडर, एक मटेरियल यूज कर सकते हो या दो मटेरियल यूज कर सकते हो एट ए टाइम, एक सपोर्ट एक मेन मटेरियल, क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप परचेस कर रहे हो या 3D प्रिंटर के बारे में बता रहे हो। या कोई भी आप गए किसी का अभिषेक गांव में गए आपके पास में, आपने एफडीपी किया है तो आप पूछना तो पड़ेगा ना, सर बिल्ड वॉल्यूम क्या है, कौन से मटेरियल आप यूज कर सकते हो, तब जाके पता चला हाँ मैंने भी एफडीपी किया था खोलते कॉलेज में। सो दिस बेसिक नॉलेज यू मस्ट हैव, ओके? या so resin 3D printer where we are using the laser, it incidents on the photopolymer और क्योर हो जाता है, राइट? ये सेकेंड ईयर का बच्चा था जेडी कॉलेज का, ही अप्रोच मी फॉर दैट प्रोस्थेटिक हैंड, एक ह्यूमनॉइड हैंड बनाया था हमने, ये एफडीएम 3D प्रिंटिंग से बनाया था, राइट? So our students also can develop those things. Yeah. SLA देखा है वीडियो, इसके पहले के सेशन में हुए होंगे ना? Yes or no please? Okay, हाँ. So I'm skipping this. These are the major 3D printers widely used for the medical application, Formlabs, Moonray. हाँ, now I'm discussing the case studies related to it, right? Smile design, crowns आपने देखे होंगे, crowns पता है जब ये रूट कैनल किसका हुआ है, एक्सट्रैक्शन, तो कैप यूज करते हैं, पता है? कैप्स, सो दैट इज डेवलप विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर। अभी मेटल क्राउन्स आते हैं, पहले मिलिंग से बनते थे, अभी मेटल 3D प्रिंटिंग से बनते हैं। उसमें भी देखे होंगे आपने, जस्ट इनिशियली वी नीड टू प्लान इट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर ब्लू स्काई बायो पे करते हैं प्लान, पेशेंट स्पेसिफिक, और वैसे क्राउन उसको मोल्ड करते हैं एंड 3D प्रिंटर विल गिव द आउटपुट। आपने आजोबा आजी नकली दात लावतात, काय म्हणतात त्याला? कवडी म्हणतात ना समथिंग मराठीमध्ये, कवटी काय, कवडी, राइट? उसको यहाँ पे बोलते हैं डेंचर। सो यूजुअली वो अलग अलग शेप्स का रहता है। सो विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग इटसेल्फ यू कैन डेवलप द पेशेंट स्पेसिफिक डेंचर, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग इटसेल्फ। सर्जिकल गाइड, as a mechanical engineer we used to work on jig and fixture, right? Jig and fixture मध्ये आपण कशासाठी वापरतो, you are aware, right? In industry or dentistry there is a need of surgical guide, you know. किसी का दांत उखड़ा था डेंटल ट्रीटमेंट में, आपका निकाला था सर दांत निकालने के बाद यूजुअली नकली दांत लगाते हैं, you know, नकली दांत लगाते हैं, तो वहां पे इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। इम्प्लांट यानी आपको वहां पे पहले रॉड डालना पड़ता है जैसे कॉलम, और उस पे नकली दांत। सो टू गाइडिंग दैट पर्टिकुलर टूल, टू गाइडिंग दैट पर्टिकुलर ड्रिल वी नीड गाइड, तो उसके लिए उसको बोलते हैं सर्जिकल गाइड। ये आप देख सकते हो, दिस इज द केस। मिसिंग टूथ रहेगा आपका, लाइक मिसिंग टूथ विल बी देयर, देन इम्प्लांट प्लेसमेंट,
just you need to place that particular implant at that particular site. ऐसी सर्जिकल गाइड इनके लिए बनाई. सीटी स्कैन लिया गया उसका, ओके, सीटी स्कैन लेने के बाद ब्लू स्काई बायो सॉफ्टवेयर पे लिया गया, एंड देन वी हैव 3D प्रिंटेड द सर्जिकल गाइड, एंड यू कैन सी, अभी दूर से दिखेगा आपको, या you can see the drill did with the help of that surgical guide, and then x-ray of that particular drill implant, और ऐसे implant लगाता है. On that implant crown यानी नकली दांत जो ऊपर का रहता है वो लगाया जाता है. Got it? तो इसमें रेजिन प्रिंटिंग का यूज हुआ. कौन से प्रिंटिंग? रेजिन प्रिंटिंग, SLA हमने यूज किया, या DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग. ओके, DLP और SLA both can be used. Why? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है. FDM का आप नहीं कर सकते, उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड SLA फॉर दैट. एंडो गाइड, सर्जिकल गाइड इज यूज्ड बाय अ पीरियोडोंटिस्ट. डेंटिस्ट्री में मल्टीपल डिवीजन रहता है. जो छोटे बच्चों का पीरियोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, आपके दांत अगर ये है, एंडोडोंटिस्ट हु इज लुकिंग आफ्टर द रूट कनाल, स्पेशलाइज इन रूट कनाल, राइट? सो मल्टीपल डेंटिस्ट्री इज देयर. तो एंडोडोंटिस्ट एक GDC की थी, रूट कनाल करते समय नीचे में जो एकदम बॉटम में था वहां पे कैल्सिफाइड कैनाल क्लीन नहीं कर सकते थे. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया वी डेवलप द एंडो गाइड with the help of 3D printing itself. You can see this is surgical guide, endo guide we develop. Even we develop the mock-up. पहले हमने छोटे टीथ बनाए और उस पे उन्होंने ड्रिल करके देखा. देख रहे हैं मॉक सर्जरी. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ with the Dr. Shubha Hegde, professor of Government Dental College, Nagpur. So we did this research with her. So गाइड प्लेसमेंट किया, कैल्सिफाइड को ओपन किया. एक्सरे में भी आप देख सकते हो कि दैट मैक्सिमम पोजीशन कैनल की पोजीशन से वी हैव क्लियर द इन्फेक्शन. एक्सरे में कभी भी इन्फेक्शन यानी क्या, जहां पे आपको डार्क दिखेगा वो इन्फेक्शन रहता है. सो वी हैव क्लियर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंडो गाइड. क्लियर एनालर मैंने बताया था आपको, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग इटसेल्फ वी कैन डेवलप दिस क्लियर एनालर. I was having that particular startup with my partner orthodontist. आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर जो स्पेसिंग रहती है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम, हेकड़े वाकड़े दांत, that can be done solved by the help of this 3D printing. रेजिन प्रिंटिंग यूज करेंगे उसमें, right? Yeah, even in my case, like in my PhD, which I have just completed, awarded PhD from VNIT Nagpur. So I am the recipient of DST grant. 30 lakhs की हमें grant मिली थी. Here we have done the work. We have solved the problem of nephrology. किडनी फेलियर होने के पता है क्या करते हैं? दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होता नहीं या पॉसिबल नहीं होता, दूसरा डायलिसिस. बट ग्लोबली the dialysis failure is the biggest challenge. So Dr. Okhalkar is there, who is a renowned nephrologist who reported that particular problem, and we have developed the implant to reduce the dialysis problem, to reduce the dialysis failure, you know. And I glad to tell you the prototype and everything is developed with the help of 3D printing. So ये AVF रहता है, वो वीडियो क्लिक कर सकते हो आप. इनको AVF क्या रहता है बता देता हूँ. हो रहा है क्लिक? नहीं हो रहा है? Let it be. Okay, so with the help of 3D printing we have developed 3D printed mold हमने बनाई. जो इनिशियली मुझे प्रोटोटाइप बना था विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन. मुझे मटेरियल ऐसे चाहिए था जो इलोंगेट हो. सो वी हैव सिलेक्टेड द सिलिकॉन एज अ मटेरियल. सो वी हैव क्रिएटेड द मोल्ड विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, एंड देन वी हैव डिड द कास्टिंग, एंड वी हैव डेवलप्ड द मॉक इम्प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग. नेक्स्ट नहीं हो रहा. हाँ. इवन in ideation step we can develop. In ideation step I have developed multiple implant for that, to solve that particular solution. जैसे एंजियोप्लास्टी रहती है, you know, product development as a mechanical engineer अपने को brainstorming करनी पड़ेगी, right? So for that, not only so we can get the physical output with the help of this. Yeah. Even one of the problem was there to get the artificial blood vessels. So we have created the artificial blood vessel with the help of 3D printing and electrospinning for our in vitro studies. This was the in vitro setup which we have created.
टू सिमुलेट इन विट्रो यानी क्या, डायरेक्टली एनिमल ह्यूमन ट्रायल्स पे नहीं जा सकते, एनिमल ट्रायल्स पे अपने को पहले एक्सपेरिमेंटल करना पड़ता है. सो फॉर दैट मॉकअप आल्सो वी हैव यूज्ड वेरियस 3D प्रिंटिंग पार्ट्स. This was the final implant which I have developed in VRIT, right? And yes, we have shown to various doctors as well. हा लिंक व्हिडिओ लागतो का बघ बरं, इकडे लेफ्टला, हा खाली खाली. ओके, राहू दे, लेट इट बी. This is the intraoperative image. This is the implant I have developed by using 3D printing. And glad to tell you that we have successfully implanted this in a goat. Means animal study करनी पड़ती है पहले human के पहले, right? So in NVC, Nagpur Veterinary College, in association with them, we have did with the this implant intraoperative. ये vein रहती है, this is vein and this is artery, right? So ये implant उस पर develop किया गया. So basic problem is वो remodeling होता है to solve that particular case. We don't have that much time. That's why just I'm telling you how I have used 3D printing, and you can use 3D printing and those software. That's why I'm giving this example to sensitize you. This was our team, Pawan Shahane, plastic surgeon. That project was interdisciplinary, you know. Plastic surgeon, Dr. Pawan Shahane, who is the renowned plastic surgeon. जब भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम किया, then we have developed one चीन. ये चीन रहता ना, चीन का हमने 3D प्रिंटिंग से मॉकअप बनाया. एक पेशेंट आया था उनके पास कि मुझे शिवाजी की तरह उनकी चीन चाहिए. So we have taken the CT scan and we have given the prosthesis here with the help of 3D printing. And all those team members were there. Dr. Padode, who was my mentor, everyone, AIMS, radiology, multiple. And these are the DLP machines available, which are majorly used. Yeah, this was the case study. I told you, रामायण में नाक कटा था, रावण दे नहीं पाया, but with the help of 3D printing, we can do that. Yeah, that was the patient from GD Gadchiroli. आप देख रहे हो वो कान प्री ऑपरेटिव कैसा डिफेक्टिव कान है, दिख रहा है? So उसका एक कान वैसे था, okay, and दूसरा कान ठीक था. Another ear was good. So what we have did, we have scanned that good ear. जो मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का वीडियो दिखाया था, एक्स्ट्रा ओरल स्कैनिंग, उससे स्कैन लिया. एंड व्हाट वी डिड, वो स्कैन से क्या मिला, फिर कैड मॉडल मिल गया. एंड वी हैव क्रिएटेड द मिरर मेश मिक्सर सॉफ्टवेयर में. ठीक है, मेश मिक्सर में उसका मिरर किया एंड देन वी हैव 3D प्रिंटेड दैट पर्टिकुलर फाइल एंड डिड द प्रोस्थेसिस. दिस स्टडी वी डिड विद डॉक्टर विजेता, VSPM Dental College, and with Dr. Tulsi, GDC. Right now she is the HOD in IGMC. You know, right now there is a bionic error. Bio 3D printing, you are aware? कुथे सर आले होते ना, कुथे सर आले होते एज अ स्पीकर, मुझे शेड्यूल में दिखा था. ओके, यू नो 3D प्रिंटिंग के आगे अभी दुनिया गई है. जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग, नाउ देयर इज अ बायो 3D प्रिंटिंग. You can directly print the bio, means tissue related material. So bionic ear is there right now. I am skipping this. Yeah, metal 3D printing, DMLS. You can develop all those stuff, metal related reconstruction with the help of 3D printing. मैं skip कर रहा हूँ. Yeah. इसके पहले आप ये देख लो, just cranial surgery. Titanium plate, titanium, we can 3D print the titanium right now. So in neurosurgery, we use, we need such a reconstruction or rehab. So with the help of this metal 3D printing, we can do that. So Dr. Hamid, and now the lucid implant is one of my friend, Dr. Pranav, is looking that incredible 3D from Pune, is giving that particular service. Metal 3D printing, right? You can see this case of China. कितनी बाजू? देखो उसका सर देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो, मिस हो जाएगा नहीं तो. कैसा था? टोटली एम्प्टी, वहां पे कुछ था ही नहीं. And with the help of metal 3D printing, we are able to develop this.
वहां पर टाइटेनियम मैश लगाया गया. And right now, this is not only the China case study, but India also. There are various case studies are happening in Nagpur also, right? So you can see the this beauty. Bio 3D printing के बारे में सुना है? नहीं हुआ है? Okay. So 3D printing अभी पुराना हो गया. When I was there in Raisoni, means after VNIT, I have purchased 3D printer in Raisoni. At that time 3D printing newer technology there, and I have बहुत outreach किया मैंने उसके लिए. But right now the trending is bio 3D printing. Can you tell me, जैसे मैंने बोला अभी it is boon to mankind, आप कुछ भी organ भी बना सकते हो right now. But sir ये possible कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? ओके, घर बन रहा है वो तो पता है ना, कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर्स. एंड अगर सिविल वाला है तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट. इवन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 3D प्रिंटर करके प्रोजेक्ट दीजिए, रेपरा भी दीजिए, और उसमें रॉ मटेरियल ये वाला अपना मोटर मिक्सचर दीजिए. जस्ट अपने सैंपल भी बना लिए, वी कैन गेट द फंडिंग. डॉक्टर रालेगावकर सर इज देयर फ्रॉम VNIT. सर ने अभी एक प्रोजेक्ट डाला था एंड ही रिसीव्ड मल्टीपल बिग ग्रांट फॉर दैट, बिकॉज दैट इज ट्रेंडिंग है. यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन 3D. L&T कंपनी पता है आपको, 3D प्रिंटर से गन बन रहे हैं. L&T कंपनी इज देयर, IIT मद्रास, ऑफिसेस बन रहे हैं. सबसे पहले कैलिफोर्निया में हुआ था, कैलिफोर्निया एंड देन चाइना, बट राइट नाउ इन इंडिया ऑल्सो कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग इज बूमिंग right now. So and bio 3D printing is also booming. Yeah, bio 3D printing. Can you tell me what is the smallest part of our body? Smallest part. Good. Cell. Clap for him. There is a what we can say cell, इसलिए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग आता है, टिश्यू इंजीनियरिंग. सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनता है ऑर्गन. ओके, गॉट माय पॉइंट? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. सेल को लिया जाता है इन दिस पर्टिकुलर बायो 3D प्रिंटिंग, एंड देन सेल, जैसे अभी FDM का आपने देखा ना, ऐसे FDM का स्ट्रक्चर देखा होता है लेयर बाय लेयर. सो हियर so they drop by drop ऐसे cells के drop बनते हैं, और tendency of cell is like that. After some time it fuse together to give the organ, right? Drop by drop, after time it fuse together to give the tissue and organ, right? So in this way bio ink will be there, and a cell, then bio paper and bio plotter we will require, and you will get the organ. And right now we are able to print the tissues. Okay, skin बन रही है अभी, right now there is a heart development of heart and liver also. यहाँ पे भी एक्सट्रूडर, इट इज सिंपली लाइक FDM 3D प्रिंटर. 2 नोजल्स रहेंगे, एक में हाइड्रोजेल बायो इंक रहेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पे इंक जेट होगा, और बाद में आफ्टर सम टाइम्स इट फ्यूज टुगेदर टू गिव द पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन, राइट? वीडियो, हाँ, you can see this video. कितनी 5 मिनट हो? None. Back and forth and up and down in order to produce. It referred from the FDM 3D printer itself. So ऊपर वहां पे inkjet 3D printing देखेगा आपको, inkjet है, वहां पे cells लगाए हुए रहेंगे. VNIT is having one of the bio plotter, almost costing 2.5 crore. वो स्कैफोल्ड प्रिंट कर सकता है. Say this, bio paper, and drop by drop cell will be there. Tens of thousands of cells are then injected into this water-based material. After some time, drop by drop, and after some time they will fuse together. Amazing. Nature then takes over, and the following experiments slowly fuse together. As this occurs, the biopaper dissolves away, leaving the final bio-coated bottom part. Some future bioprocess are. Yeah, I'm skipping this bio 3D printing link. Just overview. Hope you have seen the applications, right? That was my case study, which I have till now I have shown related to FDM, and these are some of the other agriculture. On demand you can develop. As a mechanical engineer you can develop anything, any tool right now. Yeah, corn sheller, whatever. Yeah, I had been invited in LED college
LED designing, म्हणजे fashion designing and interior designing. So interior designing, antique things are rare. Antique चीजें बहुत महंगी रहती है, but right now with the help of 3D scanning and 3D printing, we can develop those antique things to decorate your home. Yeah, earlier architecture is developed only on a map, right? 3D model, but with the help of 3D printing, you can develop those mock-ups. These are the some of the mock-ups which I have created. I have developed for one of the architecture. Yeah, as I told you, this was the 3D printed office bridge from Amsterdam. ये सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर IIT मद्रास में बना था, जिस पहले उन्होंने टॉयलेट बनाया, फिर केरला में मल्टीपल हाउसेस बने, एंड नाउ L&T और IIT मद्रास से मल्टीपल ऑफिसेस बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाया. यू कैन गूगल एंड सी द वीडियो. This video is of California, but right now if you Google, I don't मुझे उतना टाइम नहीं मिला, but you can explore. पोस्ट ऑफिस अभी इनॉग्रेट हुआ है कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर से. जस्ट सिंपल, द ओनली दैट इज यूजिंग द FDM टेक्नोलॉजी. मटेरियल क्या रहेगा इसमें? मॉर्टर मिक्सचर, राइट? टेक्नोलॉजी विल द सेम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. यहां पे रोबोटिक आर्म यूज करते हैं या गैंट्री, काउंटर क्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, राइट? Yeah, see the beauty. Can we develop it with the help of CNC or lathe? Can we? So that's the beauty of 3D printing, that we can develop the complex shapes, integrate shape with the help of 3D printing. That's the beauty, and because of that 3D printing is widely used. So you can see these are the architectural model, customization, whatever you required, you can develop by your own. Just converting the what we can say concept into reality. Jewelry, yeah. Dalit Peleg is one of the fashion designer. उन्होंने ऐसा ही वर्कशॉप किया, and now she is booming worldwide because she developed the cloth with the help of this FDM technology. उसने सिर्फ मटेरियल पे काम किया, उसने फैब्रिक ऐसे बनाया which can be used on FDM 3D printer, and she is famous in India worldwide. So you can develop all jewelry with the help of 3D printing. We have developed one of the jewelry for our client. हमने pattern बनाया, and then we did a investment casting, and we have given to one of the industry. Yes, Nike, Adidas, you can use. Even as a student, if you learn and you add this skill in your CV, you can get the job in these industries as well. Means those are using 3D printing or dedicated 3D printer industry. अभी क्या कर रहे हैं अपन? मैकेनिकल इंडस्ट्री को ही ये कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं जॉब के लिए. वाई? आप 3D प्रिंटिंग सीखो, 3D प्रिंटिंग वाली कंपनी में जाओ. अभी आई वॉज नॉट अवेयर, नहीं तो मैंने 2 स्लाइड ही रखी रहती. हाउ इट विल बी बेनिफिटेड टू योर स्टूडेंट, राइट? सो यू कैन गेट द जॉब, यू कैन गेट द MS, MTech विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, राइट? दिस इज डेवलप फॉर मोची, हमने बनाया था, नागपुर का एक ब्रांड है. एविएशन इंडस्ट्री, एवरीवन इज यूजिंग 3D प्रिंटिंग. यू नो, ब्लेड कार, अभी तो पूरा ऑटो एक्सपो होता है, 75% पार्ट्स आर 3D प्रिंटेड. सर FDM का कैसे होगा? यस, नो, बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी नॉट ओनली वर्क ऑन मशीन, वी वर्क ऑन मटेरियल्स ऑल्सो, राइट? Carbon fiber and other materials are being using in 3D printing, and those are developed. पूरा वीडियो ही है इसमें जहाँ पे एक्सपो होता है, जहाँ पे 75% 50% पार्ट आर 3D प्रिंटेड. सो आई एम स्कीपिंग दिस, बस जस्ट आप गूगल करके देखना. सो एविएशन, ऑटोमोबाइल में भी 3D प्रिंटिंग का बहुत यूज हो रहा है. सो यू कैन एक्सप्लोर दैट. इंजन्स बन रहे हैं, एवरीथिंग, ड्रोन्स, इवन गन यू कैन डेवलप. किक मूवी आपने देखा होगा, लास्ट में सलमान खान असेंबल करता है, राइट? यू कैन 3D प्रिंटिंग ओवर योर वेपन. I'm skipping this. Yeah, yes, yeah, food, yeah, space. अगर नासा स्पेस में मून पे या मार्स पे कोई गया तो कैन वी शिप एनी टूल फॉर टू देम? सो दैट्स व्हाई देयर इज अ 3D प्रिंटिंग डेवलप फॉर द स्पेस, सो दैट दे कैन डेवलप देयर ओन टूल एंड डिवाइसेस इन स्पेस इटसेल्फ. रैचेट सबसे पहले एक उन्होंने डिजाइन किया था नासा ने. फ्लेक्सिबल प्लास्टर, multiple things are there which, yeah, this was the trending, as I told you.
Miniature. Earlier we used to store our moments by photograph, but right now you can develop with the help of this 3D printing. Yeah, हो गया ना? है बहुत कंटेंट, बट अभी लिमिट करते हैं आपका सेशन, है ना? डन. Okay, thank you from my side. Yes, open for question if any. कुछ डाउट, क्वेश्चंस? एंड आई मस्ट से भिसे सर ने जैसे बोला, यहाँ के जो भी फैकल्टी है, प्लीज आप 3D प्रिंटिंग पे काम करो बहुत, यानी डोंट थिंक कि आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है. यू कैन अप्रोच टू एनीवन, यू कैन कोलैबोरेट विद डॉक्टर, यू कैन कोलैबोरेट विद एनीवन, बट यू कैन गेट द कंसल्टेंसी जो मिलती नहीं है. कंसल्टेंसी मिलेगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ग्रांट्स मिलेंगे. सो थिंक ऑन दैट नोट, राइट? या एनी क्वेश्चंस? एक आर्टिकल डिस्कशन है, मैं बाद में करूंगा. यस सर. Yes, of course. PhD totally only on material. If you consider them only material, you can do the one PhD on that particular. Just आपको अलग अलग मटेरियल को कंपोजिट करना है, just material टेस्ट करना है, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन. Just you can use the PhD. Right now in Ramdev Baba, I have given one of the tasks to my UG student. हम उसी 3D printer को change कर रहे हैं for ceramic printing. Ceramic is widely used material in implant development. So what we did, but in FDM we required that particular temperature उतना बनना चाहिए. So what we are doing, we are taking the ceramic material, we are developing the filament from extruder बता रहा था ना, extruder, and we are going to use that filament on this particular 3D printer. हो गया आपका PhD डिवाइस डेवलप. उसमें IP भी 2 पेटेंट निकलने वाला है और पेपर भी डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा. डेफिनेटली 3D प्रिंटिंग में बहुत स्कोप है सर, रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. सो यू मस्ट थिंक ऑन 3D प्रिंटिंग. राइट नाउ आई एम टीचिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट इम्प्लांट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्प्लांट एंड प्रोसेसेस. एक बायोमेडिकल डिपार्टमेंट को सब्जेक्ट है. एट अ टाइम 13 हमारे केस स्टडी चल रहे हैं अलॉन्ग विथ एम्स, IGMC, प्लास्टिक सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, और 10 तो पेटेंट निकलेंगे. उसमें पेटेंट भी निकलेंगे और पेपर्स भी, SCI, स्कोपस, गारंटी. Yesterday I had a discussion with Dr. Ashish Bodhade. एक, you know, as a NRF and MBA, we have the task or target about the publication also, right? रहता ही है कि स्कोपस निकालो, and आप निकाल सकते हो within 2-3 months. स्कोपस तो निकल जाता है, मैंने देखा. So why not? SCI निकलता है. So think on 3D printing related research. Even आप स्टूडेंट को भी दे सकते हैं. या not right now on FDM metal print. We can't use directly metal on this, but what we can do, we can develop a pattern and then further we can use the casting, means post processing. 3D प्रिंटिंग एंड पोस्ट रैपिड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उनको, तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू यूज ऑन 3D प्रिंटिंग, देन यू कैन अप्रोच टू मेटल. दोज आर हैविंग द मेटल 3D प्रिंटर्स. IIT बॉम्बे के पास है, इनक्रेडिबल 3D के पास है. आपको अगर टाइटेनियम का कुछ छोटा सा पार्ट बनाना है, सो वी कैन कनेक्ट विद देम. एंड इफ यू वांट metal 3D printed part as an output, so initially develop a pattern and then go for the casting. So finally you will get the final object in we can say metal. Yes. As you know, welding is also additive manufacturing. Cladding, right? So जो metal printing में क्या हो रहा है, material layer by layer ही add कर रहे हैं. There is one of the another booming area, hybrid layer manufacturing. CNC के drawbacks मैंने बताया आपको. CNC और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. CNC कॉम्प्लेक्स मशीन डेवलप नहीं कर सकते थे, और 3D प्रिंटिंग वाज स्लोअर. अगर आप कोई पार्ट को CNC को दे रहे हो, 3D प्रिंटर को दे रहे हो, तो CNC जल्दी बनाएगा. So IIT Bombay came with this particular concept, hybrid manufacturing. They have combined the conventional CNC and additive technology. तो उन्होंने क्या किया, CNC लिया 5 axis and 3 axis और उसमें वेल्डिंग को ऐड कर दिया. And they have come up with the hybrid layered manufacturing. जो इनके ड्रॉबैक्स थे 3D प्रिंटिंग के, वो भी ओवरकम हो गए, और जो कन्वेंशनल के थे CNC के, वो भी ओवरकम हो गए.
हाइब्रिड लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग को उन्होंने कर। डॉक्टर करुणाकरन सर इज देयर from IIT Bombay, who started this concept, and right now it is trending. और cladding तो हो ही रहे, आप welding का use कर सकते हो. Yeah, okay. Over to next session for next section. We are running short. Thank you. एक 10 मिनट के लिए अपन बाद में एक रिसर्च पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं. Okay, thank you very much. हाँ.